करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर के हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट में ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, डिफरेंस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम, हैंड होल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, सेंसर नोड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, स्मार्ट कार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट, system cell, system calls, system call for process management, system call for file management, system call for directory management, window, win32, API यानी कि application programming interface, operating system, monolithic system, layered system, microkernel systems, client server system, exokernel, लेट्स सम ऑफ एंड लेट्स रेफरेंसेस कुछ देखेंगे, फिर बाइबलोग्राफी, देन यूनिट एंड एक्सरसाइज को देखेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर इज टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग द ऑपरेटिंग सिस्टम is provided user and processor to understand the various operating system structure and to describe various type of operating systems। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज एंड यूज़र की प्रोसेसिंग जो होती हैं कंप्यूटर की, वो सारे सिस्टम हम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फिर उसके बाद में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उनको भी समझेंगे। टू डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हम यहाँ पर काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को देख रहे होंगे। यहाँ पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द एनवायरमेंटल विद इन द विच इज प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड इन इट इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंड द गोल ऑफ सिस्टम will be which will help us to select the algorithm and strategies for the design and system। ओके, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स कितने टाइप। पहले मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर यूज्ड इन अ वेब सर्वर ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट और सर्वर्स डेडिकेटेड फॉर बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। मेन फ्रेम में क्या होता है कि बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट के सर्वर्स पर डेडिकेट किए जाते हैं। देन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम आर ओरिएंटेड सच अ वे टू कैन हैंडल मेजर मेनी जॉब्स साइमल्टेनियसली। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक ही साथ की जा सकती हैं, इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, इसके ओरिएंटेशन को डिज़ाइन किया गया है। मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैन डील विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि एक ही टाइम पे एक ही वेबसाइट से काफ़ी लोग ऑर्डर कर रहे होते हैं। वो होती है एक वेबसाइट जिसके अंदर होता है एक स्टोर, और उस स्टोर पे काफ़ी लोग जाके मल्टीपल टाइम पे ऑर्डर कर रहे होते हैं। इसके लिए इस सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर कि मेन फ्रेम कैन डील लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डेटा। उसमें से काफ़ी लोगों को इनपुट भी मिल रहे होते हैं और काफ़ी लोगों को आउटपुट भी मिल रहा है। हम इनपुट दे रहे होते हैं, बहुत लोग इनपुट दे रहे होते हैं और बहुत लोगों को आउटपुट मिल रहा होता है। द मेन सर्विस ऑफ मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ जो मेन सर्विसेज प्रोवाइड करता है मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बारे में समझ लेते हैं। टू हैंडल बैच प्रोसेसिंग फॉर जॉब एंड टू हैंडल ट्रांजेक्शन्स प्रोसेसिंग फॉर मल्टीपल रिक्वेस्ट, time sharing of server allowing to multiple remote and user to have an access to server, to handle batch processing of job, मतलब एक पूरी बैच की प्रोसेसिंग कर सकता है ये। टू हैंडल ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग मल्टीपल रिक्वेस्ट, काफ़ी सारे रिक्वेस्ट के ट्रांजेक्शन प्रोसेस कर सकता है। टाइम शेयरिंग ऑफ सर्वर एंड अलाउ टू मल्टीपल रिमोट यूजर्स हैव एक्सेस टू सर्वर, मतलब रिमोटली भी उसको सर्वर को यूज किया जा सकता है। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ लेते हैं। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आर वन ऑफ द वन दैट रन्स on the machine which is the dedicated server, Solaris, Linux, Windows and some examples of server operating system। जो भी हम अपने कंप्यूटर लैपटॉप में यूज करते हैं विंडोज़, वो भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही आता है। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ टू शेयरिंग मल्टीपल रिसोर्सेज लाइक हार्डवेयर, फाइल और प्रिंट सर्विसेज। वेब पेजेस are stored on a dedicated server to handle request and response। Multiprocessing operating system, multiprocessing operating system are also known as a parallel computer। Multiprocessing depending upon the multiple process and cannot concept connected to the layer। Multiprocessing system
एज नोन एज अ पैरेलल कंप्यूटर, मतलब एक पैरेलल यूनिवर्स का नाम सुना होगा आपने, बट वो एक कॉन्सेप्ट है या फिर एक एक्सेप्शन है। इसके अंदर क्या है, मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम आर ऑल्सो नोन एज अ पैरेलल कंप्यूटर, मल्टी कंप्यूटर डिपेंडिंग अपॉन हाउ मल्टीपल प्रोसेस कैन कनेक्टेड एंड शेयर। एंड सेकेंड जो आता है, द कंप्यूटर हैव द हाई स्पीड कम्युनिकेशन मैकेनिज्म विच इज स्टोर स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी। इस कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि इसमें काफ़ी सारे, इस प्रोसेस के अंदर जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके अंदर हाईली स्पीड कम्युनिकेशन मैकेनिज्म फिट किया होता है जिसके अंदर कनेक्टिविटी स्ट्रांग होती है। पर्सनल कंप्यूटर आर ऑल्सो क्रिएटेड बाय एम्बेडेड विद द मल्टी प्रोसेसर एंड टेक्नोलॉजीज। क्योंकि हमें गेमिंग करना होता है, अकाउंटिंग करनी होती है, तो मल्टी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, मतलब मल्टीपल काम हम करते हैं एक ही कंप्यूटर के ऊपर, तो इसलिए इसको मल्टीपल प्रोसेसर टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है, जिसमें कि काफ़ी सारे काम होते हैं। मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स हाई प्रोसेसर एंड स्पीड एंड मल्टीपल प्रोसेसर इनटू सिंगल सिस्टम। वही मैंने आपको बोला कि इसमें आप मल्टीपल प्रोसेसिंग कर सकते हो। एंड पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम आर इंस्टॉल्ड इन machines used by common and large number of users. They support multi-programming, running multiple programs like Word, Excel, games, internet access simultaneously on the mechanism. Example Linux, Windows, Mac. पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम और पर्सनल कंप्यूटर की तरह यहाँ पर समझ सकते हो आप हैंडलिंग करके। आप पर्सनल कंप्यूटर को एग्जाम्पल के तौर पे ले लो और बाकी आप जो काम करते हो उसको इसके तौर पे ले लो। देन हैंडल जो आपके यहाँ पर होते हैं, हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आर फाउंड इन हैंडलेड डिवाइस लाइक स्मार्टफोन एंड टैबलेट। इट इज़ नोन एज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। जिससे कि आज हमारे पास सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, तो उसको एज अ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ले सकते हैं, और वो एंड्रॉयड है तो उसको हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में कहा जाता है। द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम टुडे मार्केट इज़ एंड्रॉयड एंड iOS। ओके, मैंने पहले आपको बताया। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम नीड हाई प्रोसेसिंग प्रोसेसर। इट इज़ ऑल्सो एम्बेडेड विद द डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स। जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो स्मार्टफोन में ही हो रही है, तो सारा कुछ करने के लिए इसमें हाई प्रोसेसर सिस्टम भी लगाया जाता है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिज़ाइन फॉर those devices which are not considered as a computer, and this operating system pre-installed and devices by device manufacturer. All pre-installed software are in ROM and no change of could be the by the user. And the best example embedded operating system is washing machine। मतलब समझ सकते हो कि आप एक वॉशिंग मशीन है, ये मान लीजिए, और एक ओवन है, इस तरह से ये कोई ओवन है। इनके अंदर जो प्रोसेसर यूज किया जाता है उस प्रोसेसर में आप चेंजेस नहीं कर सकते। सिंपली ये यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे मोबाइल में आप चेंज कर सकते हैं, कंप्यूटर में आप लिनक्स डाल सकते हैं, विंडो डाल सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। बट एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। जो उसमें एग्जैक्टली पहले से फिट है वही फंक्शन वहाँ पे बार बार रन करेगा, रिपीट करेगा, यूज करेगा। एंड थर्डली बात करें तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हैव द स्ट्रिक्ट टाइम ऑफ कंस्ट्रक्ट एंड ड्यू टू द विच इज यूज्ड एप्लीकेशन आर वेरी क्रिटिकल इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम are classified into the hard real time operating system, soft real system। okay, hard real time और soft real time में hard real time is system very stringent time and construct certain actions should be occur at a time that only component are tightly coupled and hard real time। soft real time is operating system is one of the where the machine deadlines and some times which is will not cause damage। smart card operating systems run on a smart card and they contain process chips and embedded inside CPU के अंदर ही स्मार्ट कार्ड के प्रोसेसिंग चिप्स को यहाँ पर इनबिल्ड किया जाता है। दे हैव द वेरी हाई प्रोसेसिंग पावर एंड मेमोरी कंस्ट्रक्ट। द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ हैंडल अपनी सिंगल फंक्शन लाइक मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड लाइसेंस सॉफ्टवेयर्स। तो ये आप समझ सकते हो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी यूज़ करते हैं
एंड थर्डली बात कर लेते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें प्रोसेसर, एड्रेस स्पेस एंड उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है a processor is a program which is execute mode. Each processor has the address space, all data related to the processor and stored the table called a process table. all details all details for running and processor contain the processing power. तो यहाँ पर एड्रेस स्पेस देख लेते हैं. Computer need a mechanism distinguish between the processing sitting inside of main memory. This is done by allocation of the address space, and computer address is 32 or 64 bit given by the address space 232 or 264 bits, and virtual address spaces and playing the important role and dealing with the problem and is insufficiently memory space. File and data, which is the use of want to the retrieve back to the computer, and operating systems such as the supposed to maintain and data in a hard disk and retrieving from even needed. The operating system is arranged file in the form of hierarchy. The data goes inside of directory. Cell की बात करें तो cell common command interprets Unix, and cell become the intermediate between the user and terminal and operating system. Okay, operating system के अंदर में user और terminal के बीच में आता है cell. Every cell has the terminal for the entering of the data and get the output of instruction and giving the common computer. System calls के बारे में step by step explain the system calls mechanism. A process is running and user program in user mode want to the execute of read instruction in a file. It has been the executed and trap of the instruction transfer control. Operating system in a real has the three parameters. The first is specifying the file, second is pointing the buffer, and third is giving the number of bits of read. सो फर्स्ट वन इज़ हमें यहाँ पर काउंट करना पड़ता है, स्पेसिफाई करना पड़ता है फाइल को. सेकेंड बफर करना पड़ता है. थर्ड हमें उसमें बिट्स को रीड करना पड़ता है. काउंट इज इक्वल टू रीड and ft buffer and byte and weights. Okay, and the parameters are first pushed on the stack. Library process called the step 4. लाइब्रेरी प्रोसीजर को स्टेप 4 के अंदर रखा गया है. The library procedure possible written by assembly language and typically puts and call the number of processes. ये स्टेप बाय स्टेप है. तो स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 8 यहाँ पर ये आप आराम से समझ सकते हो. सिस्टम कॉल रीड्स और ये इस चार्ट के वजह से आप समझ सकते हो. रेफरेंसेस है मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम 4th एडिशन ऑफ एंड्रेसेस. यहाँ पर सिस्टम कॉल्स एंड प्रोसेस मैनेजमेंट. अ सिस्टम इज क्रिएट अ न्यू प्रोसेस एंड डुप्लीकेट प्रोसेस इज fork. The duplicate process will be have to the file of descriptions and register the common, and the original processor is known as the parents processor and duplicate known as a child processor. Okay, the original processor known as a parent processor and duplicate processor को बोलते हैं child processor. Process. The fork calls returns a value which is 0 and child equal to the child PID process identifier in parent. Okay, in the parent. System calls execute with the request and service and terminating by the process. Loading of the program and changing the original images and duplicate the needed to be executed. PID यानी कि process identifier would be help to distinguish between the child and parent process. ये दोनों को अपना अपना काम बताता है. For process management is a process system calls Linux. प्रोसेस मैनेजमेंट किस लिए दिखाएंगे तो एग्जाम्पल के तौर पर प्रोसेस को लिनक्स को इसको एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं. फॉर्क फॉर क्रिएटिंग द डुप्लीकेट प्रोसेसर एंड पेरेंट्स प्रोसेसिंग एंड वेट process is suppose the wait of the other process completed their work and access at that load terminal. System calls for files management. A file open the using system calls. The mode which is the file is supposed to be the open specify user and parameters also consist by the name and file open. New on the created be on to be created. आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हो, कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हो पैरामीटर्स के तौर पे. द फाइल आर क्लोज टू बी द यूजिंग क्लोज सिस्टम का यूज करके फाइल को क्लोज भी किया जा सकता है. Associated with the each file has been the pointer of the indicated and current position in the file. Okay,
associate कर दिया जाता है, and when the reading of subsequently and normal pointer next to the bit to be read. Okay, यहाँ पर open for the opening and file reading writing, close for the opening open file, read for the reading data and file into the buffer, write the data from the buffer into file. समझ लो आप इसको समझ लो ध्यान से एक बार, इम्पोर्टेंट हो सकता है. ओपनिंग फ्रॉम द फाइल रीडिंग राइटिंग, फाइल को ओपन करते हैं रीडिंग राइटिंग करने के लिए, एंड मतलब फाइल ओपन हुई, यहाँ पर रीड कर सकते हो, फिर राइट कर सकते हो. देन क्लोज द ओपन फाइल, यहाँ पर क्लोज भी कर सकते हो, उसको बंद भी कर सकते हो. एंड सेकेंडली उसके बाद में रीडिंग फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर द बफर, यहाँ पर इनटू द buffer to system calls directory management and mkdir, and it has the system calls the created of the empty directory, and where is rmdir and remove the empty directory. A link allowed to the same file to appear the under two or more often the different directories, allowing to several number of member of the same programming teams and share the common file. विंडो Win32 API के बारे में समझ लेते हैं. Window programs event in driven by an event called by the procedure and handle it. Window functioning, it is the most driven GUI graphical user interface based on the interaction like mouse movement, and there is the system calls which is exclusive parents window is deal with the GUI graphical user interfaces. Many of the system calls which are the parent Unix and missing to the head of the following: create processor, create a new process in Win32, wait for signal object, wait for process to execute, and उसके बाद में create a file open to exist and create a new one. Operating system, a monolithic system. In a monolithic approach, entire operating system run in a single program kernel mode. Kernel mode के अंदर पूरा operating system run कर रहा होता है आपका. The operating system is written by the collection of procedural and linking together the into single large of execution program. Single large execution program में ये सारा procedure run कर रहा होता है. Each procedures in the system is free called any other processor. हर एक प्रोसीजर में जो सिस्टम्स होते हैं फ्री होते हैं, एंड वी एबल टू द कॉल प्रोसीजर मेक इट द सिस्टम वेरी एफिशिएंट. ओके, नो इन्फॉर्मेशन इज हाइडिंग, एवरी प्रोसीजर इज विजिबल टू एवरी अदर प्रोसीजर्स. MS DO and Linux. उसके बाद में द ऑर्गेनाइजेशंस सजेशंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स and operating systems. Main function invoke of the requesting such as the procedures. Service procedures carry out the system calls. Utility functions to help services to perform certain tasks in a certain time of sequences of knowledge. So these are the very impactful topics which we are covering here. Main function is invoked to request the service procedure. Service procedure carry out the system calls, and utility function help to the procedure perform the certain task in the way of certain time. Help of the we can discuss with the digital electronics what is the certain time of task and certain time of performance. Okay, let's move over on the disadvantage. Difficult complicated structure, a crash of these procedures, and will be taken down to the entire operating system. Main processing, server processing, utility processing काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है. इस ग्राफ के मदद आप देख सकते हो. इसकी वजह से मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम 4th एडिशन को आप कंसिडर कर सकते हो ज़्यादा जानकारी के लिए. लेयर समझ लेते हैं. 5 4 3 2 1 0. The operator, user program, input and output management, operators process communication, memory and RAM management, process allocation and multi-programming. मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम 4th एडिशंस में आप इसको भी कवर कर सकते हो. आज ज़्यादा जानकारी के लिए वहाँ पे जानकारी ले सकते हो. द ऑपरेटिंग सिस्टम as organized to a series of layers and each one the construct upon the one of the below. The system constructed in the way was the system. The same concept as layer approach was also implemented. MULTICS and will concept with the consecrated the procedure and out of the ring and supposed to the make of system is called access to the process
in a ring. The diagram reflects structure and the operating system's following details. Layer 0 to 0 details and the layer allocation process as between the switching between the process and interrupted occur the time of expired. Okay, so अब माइक्रो कैनल के बारे में समझ लेते हैं. सेल में कैन अदर प्रोसेसर यूजर प्रोग्राम सर्वर्स ड्राइवर्स एंड माइक्रो कैनल की क्लॉक इंसेंस. माइक्रो कैनल स्ट्रक्चर फोकस ऑन द मेकिंग ऑफ कैनल स्मॉलर by thus reducing non-essential component. Non-essential components को reduce करके माइक्रो कैनल छोटा बनने की कोशिश करता है. दिस नॉन एसेंशियल कंपोनेंट प्लेस इन द यूजर स्पेस, और उस नॉन एसेंशियल कंपोनेंट को यूजर स्पेस के अंदर प्लेस कर दिया जाता है. द बेसिक आइडियाज बिहाइंड माइक्रो कैनल इज डिजाइन अचीव टू द हाई रिलायबिलिटी स्प्लिटिंग and operating system which is called small well defined modules. माइक्रो कैनल रन इस कैनल मोड के अंदर ही वो रन करता है. क्लाइंट सर्वर सिस्टम के बारे में बात कर ले तो मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4 क्लाइंट कर्नल, फाइल सर्वर, प्रोसेसिंग सर्वर, टर्मिनल सर्वर, ये सारा कुछ कर्नल में हो रहा होता है. बाद में नेटवर्क के थ्रू मैसेज फ्रॉम द क्लाइंट टू सर्वर. ओके, the server each of the which is provided by some services is client which is used to the services, and this most of the known as a client server models, and this is client communication with the server and by sending messages, and client need to be the known as whether the message is handled locally and there is own machines, or whether then they have a sent across network and share the remote machines. As the far off clients is concerned, the requesting sent replied and back to again. So axo kernel is run on the bottom layer of kernel, and this is a job to allocate the resources virtual machines को resources को allocation करना. then they check the attempts of the make sure the machine is trying to use somebody else's resources. यहाँ पे जो रिसोर्सेज दिए गए हैं और परफेक्टली रन कर रहे हैं इसकी भी उनको यहाँ पर एक्सो कर्नल को बताना पड़ता है. द एडवांटेज ऑफ एक्सो कर्नल इज अ स्कीम ऑफ दिस receive a layer of mapping whereas the virtual machines monitors must maintain the table of remap this address, and the exo word is needs to the only keep track with the virtual machine को सिर्फ इसको ट्रैक करना पड़ता है. इट हैज़ बीन द असाइन विद द रिसोर्सेज विच रिसोर्सेज उनको उस रिसोर्सेज के थ्रू असाइन किया गया. लेट सम ऑफ different type of operating system are used to different type of machines depending upon the need of the user. Some of these are mainframe operating system, server operating system, and embedded operating system. Handheld operating system call explain the operating system and does not different type of operating system. And system calls is the operating system activity like files management, process creation, and directory management. The structure of operating system has the involved with the time of most of common ones included monolithic, layered, and microkernel as well. So there are the list of references we have provided. The modern operating system for the edition Andreas Tenebulum and Hertebich Boss and bibliography. Operating system is concept, designate, and Galvin gang unit and exercises. Explain the microkernel approach and operating system जो कि अभी हम लोग ने देखा. Explain the client server model. क्लाइंट सर्विस मॉडल क्या होता है वो भी देखना पड़ेगा आपको, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. लिस्ट वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सप्लेन एनी टू. तो आप यहाँ पर दो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हो. ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर बता सकते हो आप यहाँ पर सुटेबल डायग्राम एग्जांपल स्ट्रक्चर डिस्क एंड ड्राइव. उसके बाद व्हाट डू यू मीन द सिस्टम कॉल्स एंड राइट सिस्टम कॉल्स डायरेक्टरी मैनेजमेंट. स्टेप बाय स्टेप कोई भी 5 स्टेप लिख के फॉलो करके उसको फिनिश कर सकते हो. लिस्ट ऑफ द एक्सप्लेन ऑफ द 5 सिस्टम कॉल्स फाइल मैनेजमेंट, उसको भी स्टेप बाय स्टेप फाइल मैनेजमेंट लिख के आप कर सकते हो. काफ़ी ईजी होता है. अगर नहीं है तो कमेंट करो, मैं आगे प्रोसेस आपको बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप. थर्ड वन चैप्टर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कॉल्ड द प्रोसेस एंड थ्रेड. थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर.